Putting you all right. So now this is our lecture 10 of income from house property, AY 22-23, CMA intermediate June 2022. ठीक है, ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 10 है. Okay, so we did this problem now. ठीक है. So any doubts in this problem? So just इसमें जो है basically in the last line the deduction on loan will be given on house property 2. Okay, because the loan was for house property 2. So this 10,000 will be given, but on this column. That's all. Okay, see, it's will be given here. Okay. So anything you want to ask in this? Okay, we'll go to next problem now. So when you have interest on loan problems, you have to be a bit more careful. Okay, because you will have to be alert about the dates and all. Okay. The next problem is calculate interest on loan for AY 17-18 to 22-23. Okay, it asked us to calculate for these 6 years. Okay, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, 6 years. These 6 assessment years. Information is loan taken on 1/1/2013. Loan is 5 lakhs. Interest rate is this. Okay. Construction commenced on 1/8. So what will be the pre-construction period start date from this? 1/8/2013. Yeah, 1/8/2013. So this and this, whichever is later. Okay. So this and this, whichever is later, will be your construction start date. One minute. Okay, and construction was completed on this date, right? So pre-construction date will be from 1/8 to 31/3. Okay, this will be our pre-construction period. So will it end on pre-construction period? Will it end on 31/3/2018? Yes, sir. Yes, sir. So it is always 31st March prior to the date of completion of construction. Okay. If your date of completion itself is this 31st March, the prior date will be 2017 31st of March. Okay. And your post-construction period will start from 1/4/2017. Okay. So in this case, just go by the. This is the turning point, sir. We were assuming that 31st March we have to take, but it is already 31st March. Then we are taking last 31st March. This is something new we were not knowing. Yes, yes. Sir, year is Year will be previous 2017. So I'm just showing you. See here. What does this say? Just go by the wording. That's all. 31st March, immediately before the completion of construction. If completion of construction is 31st March 2018, 31st March immediately before will be 31st March 2017. Okay. Right? So this is the only thing you have to be careful about. Okay. So, and then here they have given some repayments of capital. Okay. Loan repayments, capital component on these dates. We'll just use these dates. So
after these dates, we'll have to reduce it by 1 lakh. Okay, so the loan will reduce. So that's all is the role of this block. ठीक है, ये रोल बस रीपेमेंट बता रहा है कब कब रीपेमेंट करना। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, लोन अलाउड कितना है वो पता करने के लिए पहले प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो हियर व्हाट वी हैड सेड, यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वुड बी 1/8/2013 to 31/3/2017. okay, till 31/3/2017. ओके, ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। सो लेट अस सी, सो 1/8/2013 to 31/3/2017. ओके, तो चलिए इसको हम ईयर वाइज देखते हैं, जस्ट ब्रेक इट डाउन टू ईयर्स। ठीक है, 1/8 से तो फर्स्ट इट विल बी 8 months. So this is going to be 8 months here. So after this 4 continuous years. Okay, 4 years ending at 31/3/2017. Okay, तो आपका प्रिंसिपल सम था, लोन का अमाउंट कितना था, 5 लाख था, करेक्ट? इट वाज 5 लाख। एंड फर्स्ट टाइम when did he repay? First time he repaid on 2014 he repaid once, then straight away 2017. Okay, so here in 2014 1/4/2014, correct? So if 1/4/2014 beginning of the year itself he has repaid. ठीक है, तो इसीलिए ये हमको इंटरेस्ट के लिए 1 लाख कम हो जाएगा यहाँ। ओके, इंटरेस्ट विल, फॉर इंटरेस्ट कैपिटल विल बिकम लेस, and then it will be 4 lakh because next repayment is done only on 1/4/2017. It's after this date. Okay, so here just how we will calculate now, interest is 12%, that is already given to us. Okay, so this is your interest. How you will calculate is take the principal, do into 12% in your calculator, and if it is months just do 8/12. Okay, whatever months it is upon 12, then you will get this interest. ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिए, और जहाँ years पूरे हैं वहाँ सीधा what you will do is just take 4 lakhs into 12%. Other two are the same. Straight away you can write 48. Okay, ठीक है। लास्ट में एक देखिए मैंने ग्रे कॉलम बताया आपको, इंटरेस्ट अलाउड, that is nil because the pre-construction interest is allowed only in post-construction period, correct? ठीक है, 1/5 is allowed, लेकिन इस ईयर में आपको 13-14 में अलाउड है क्या कुछ, 14-15 में अलाउड है क्या? No. That's why interest allowed in the current year is nil, but this will get accumulated. ये चारों का आप टोटल करेंगे तो 184 you will get. Okay, and just divide it by 5 and see if you are getting the same figures as me. Divide by 5, you should get 36,800. Okay, just check in your calculators and see whether you are getting the same figures. These type of problems just do once at your home. Only when you do once, we will get that kind of confidence. Okay, when you follow whatever I am saying, it's possible that you are following 100%, but still do once. Yes, sir. Getting the same, sir. Okay then, right? So 36,800 is what we are getting. A post-construction period will start 1 day after this date. Okay, so it will start from 1/4/2017 onwards. ठीक है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इसके 1 दिन बाद चालू होगा। ठीक है, कुछ डाउट होगा इसमें तो आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे ना, ये हमारा मेन वीडियो है आपका इंटरेस्ट रिपेमेंट का। ठीक है, तो आप एक बार फिर से अच्छे से देख लेंगे ये 2 वीडियोस, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से करना है। ओके, so now let us see, post construction period is 1/4/2017 onwards. Again let's break it down. Here, 1 minute, and do one thing so that we can see this. I'll just hide this part. Okay, so now we can see this. So this is our solution part, post construction period, and this is the repayment period. Okay, now
Next is 1/4/2017. We have repaid 1 lakh, correct? So which is why in this year the principal has become 3 lakhs now. Okay, and after 2017 it's only 2020 year. So that's why these 3 years will have same 3 lakh, 3 lakh. 3 lakh into 12%, all 3 are 36,000. Okay, and what I've done here is you can see the pre-construction interest I've put in the first 5 years. So this is your pre-construction interest, and here I've put it in the first 5 years, 36,800. Okay, so here this will be first year of post-construction period. I got 36,000. Here I got again 36,000. Year 1920 I got again 36,000. Okay, and then in 20 there was a repayment. Okay, so this will in 20 this will reduce to 2 lakhs now. Okay, then again there was a repayment on 1/7/2021. Okay, all these are 1/4. This is 1/7 last one. Okay, so here 1/4/2020 it is 2 lakhs. Again straight away into 12% whole year you get 24,000. Okay, for the last year, which is 2021, last previous year that is. Okay, so you can see that on 1/7 he had repaid. So that means that from 1/4 से 36 तक के यानी जून तक, अप्रैल में जून तक के इट वाज स्टिल 2 लाख, करेक्ट? उसने कुछ रिपेमेंट नहीं किया था, इसलिए इसका 3 मंथ्स के लिए हम कंप्यूट करेंगे. ओके, 12 into 3/12, 2 lakhs into 12% into 3/12 करेंगे आप. ठीक है, तो आपको ये 3 मंथ्स मिल जाएगा. अब उसने रिपेमेंट यहाँ किया है जुलाई में, इसीलिए हमने जुलाई से 31/3 का 9 मंथ्स अलग किए. इसका लिए 1 लाख है. ओके, अब इसका 12% है. ठीक है, इंटू 9/12 करेंगे इसमें, सो यू विल गेट दिस. ठीक है, सो नाउ सी, सो दीज आर ऑल द इंटरेस्ट. ये आपका ये इंटरेस्ट हो गया है. लेट अस सी. So this is your interest column. So this 6,000 and 9,000 are for the same year actually. Okay, हमने दो कॉलम बनाए हैं क्योंकि दोनों का कैपिटल था वो डिफरेंट था. इसका 2 लाख था, इसका 1 लाख हो गया था. Okay, that's why we had done 2 columns for 2021. Ideally speaking, these two are the same year, correct? So 1/4/2021 to 31/3/2022. Okay, our current previous year, that is. So now, and these are our pre-construction periods. Okay, so just calculate the total interest allowed or not, we will see. Just add these two. Just go on adding these two. Okay, just add these two, you will get this. Okay, and here just add these three. So these two are the same year, right? 6,000 and 9,000 are same year. Just to 15,000 you have to add this again. This also, so this also will go here only, 51,800. So now let us see what he has asked us. Okay, if you see what he has asked us, he has asked calculate interest on loan allowed for AY 17-18 to 22-23. So just convert it into previous year. Can I say PY 2016-17 to PY 2021-22? Correct? I can say PY 16-17 to 21-22. Correct? So now if I go down, okay, PY 16-17 I said, right? So now let us just remove this and hide it. So 16-17 is basically this year, your pre-construction year. Okay, so interest allowed for 16-17 will be nil. That will be the answer for 16-17. After 16-17 you will have these 5 years, 17-18 to 21-22. Okay, so the answer will be, answer for this will be, first one will be nil, and after that you will write these 5. Okay, understood?
So you will have to do that at home once. ठीक है, नहीं तो वो confidence नहीं आएगा आपको, क्योंकि these are all highly conceptual problems. Interest on loan के problems थोड़े complex होते हैं. Sir, Little bit in also. exam we have to make. Sir, in Yes, exam we have to make table like this. Yeah, so yeah, in exam you can make a table, try to keep it short. Okay, so table, like unless you make this table, you will not be able to get the answer, right? So it is very critical for you to make this table to get the answer. Only when you make the table like this, you will be able to get the answer. Okay, but the way you write that, Okay. you can shorten things like you can just say the way you write your years and all, you can shorten that. Okay, certain things you can shorten, but the table is essential because you will not get the answer without that. Anything whichever is now interest, now in this interest column, whole thing, instead of writing that on top, you can write interest is 12% per annum, because it is 12% all throughout. Things like that you can do. Okay, chalo, we'll do one Yes. more problem. So this problem says Rajesh owns 2 house properties, both are let out. Compute his income. Okay, so now this is like our regular problems. There are 2 houses, one is Gaya, one is Mumbai. Okay, so because Mumbai is there, we'll just see what kind of data is given. One is gross municipal value, fair rent, and standard rent. Okay, just find out the GAV. Next part, what he has given is actual rent, and this is unrealized rent. Okay, so ARR minus unrealized rent will be 1 lakh minus 8,000 here, and 1 lakh 80 minus 2,000 here. For municipal tax, he has given 10% here, and here, no, because it was Mumbai, he has just made our job easier. Okay, he has directly given you the tax amount. Okay, so you don't have to do anything about Mumbai. Okay, if data is not given, then don't worry about calculating NMV by putting 10%. Don't assume anything. Okay, just consider here GMV and NMV are the same. Okay, unless anything specifically is given in the problem. Then next thing is fire insurance. In house property, in your format, do you have anything about fire insurance? GMV less municipal taxes is equals to GAV less municipal taxes is equals to NAV. NAV less standard deduction less interest on loan gives you income from house property. There is no talk about fire insurance. Okay, just leave it out completely. Whatever is there in your format, only that we will accommodate. ठीक है, फायर इंश्योरेंस को आप छोड़ देंगे पूरे, उसका कोई काम नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन है 12%. अगेन ही हैज गिवन द वैल्यू यहाँ पे, तो कोई परसेंट का भी कोई काम नहीं. दिस इज 10,000 एंड दिस इज 0. ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब चलिए फर्स्ट लेट अस डू, यहाँ पे RER निकाल लेते हैं using these 3. Okay, then we will move ahead. Other information is given here. Loan taken for construction is still unpaid. So, okay, so you will, it's still unpaid, meaning that you can take the deduction of interest on loan. For that, he has given this point. And then municipal tax of H1 is still unpaid. So, municipal tax of H1, this 10%.
Okay, it is unpaid, so you will not get any deduction, okay, for H1 because it's unpaid. And H2 is half paid by tenant, so you'll get only 500 for H2. Okay, okay. So this is all the data of the problem हमारे लिए. So let us see किसको करते हैं. पहले RER निकालिए. RER यहाँ पे. See if you are agreeing with the RER here. House 1 90,000, house 2 2 lakhs. Use these three. First higher and lower. Okay, so you will get RER. So use the same procedure. And then first, what is higher among these two? Here it is 1 lakh, here it is 2,10,000. Okay. And then lower is 90,000 and 2 lakhs. So basically the standard rent value itself is your RER. Okay, 90,000, 2 lakhs. Up next, see what is your ARR minus UR. 92 और 178 आ रहा है क्या? ARR minus UR यहाँ पे 1 lakh minus 8,000, 1,80,000 minus 2,000. Okay. So we get what? 92,000, 178,000. Okay. And higher of these two. So first higher and lower we did in RER. Now higher of these two. No. Higher is 92 here and here it is 2 lakhs. This becomes our GAV. Okay. GAV we have got 92 and 2 lakhs. चलो, we'll move ahead. ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? GAV जो हमने निकाला. तो Okay. So, okay, chaliye, let's start the computation. First is H1. Okay. So GAV is 92,000 and for H2 GAV is 2 lakh. Okay. And where it's in municipal tax is 0, correct? Because it did not pay, hence it was 0. So 92 minus 0 is 92 is your NAV here. Okay. And second case, municipal tax half was paid by the tenants, half was allowed. 500 was allowed. 2 lakh minus 500 gives you 199,500 NAV. ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, दोनों का NAV आ गया. Now next is standard deduction, straight forward. ये 92 जा रहा है ना आपका, this 92 and this 199, इसका आप 30% निकालिए. Okay, be careful कि कई बार ना हमको होता है जैसे एग्जाम में कि 30, we get confused with 30% and 1/3. Okay, 1/3 is 33 1/3. Okay, so 1/3 is different than 30%. कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ. That's all. ठीक है, so just be careful that standard deduction is 30% of NAV. So this is the value. 30% of 92,000 and 30% of 199,500. ठीक है, ये कंफर्म कीजिए. Is confirm if the standard deduction value is okay. आप सब नींद में है मेरे को लग रहा है. Everyone is half Sir, asleep. getting the same. हाँ? Yes, sir. Getting the same, sir. 27,600 and Okay. 5,985. Okay. फिर then जो है interest on loan जो था, we'll see इसमें. Interest on loan is here 10,000, here it is nil. Just take whatever he has given, that's all. Okay. Interest on loan is 10,000 here. Okay. Add these two deductions and total of deductions will put here. And then this minus this will give you 54,400.
This is your income from house property. This one, this value. Here interest on loan was nil, so this is same as the total here. Okay, and you'll do this minus this, you will get this one. ठीक है, तो हमारा जो है हाउस 1 का वैल्यू इज दिस, हाउस 2 का वैल्यू इज दिस. नाउ ऐड बोथ ऑफ दिस and you will get total income from house property. Okay, and there are several properties, you have to add all of them, whatever individual values you are getting, just add and put the total as income from house property. ठीक है, so this is the problem. इसमें कोई डाउट? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, there was nothing in it. ठीक है, this was like our regular problems, correct? Okay, so what else I had to do today? Yeah, ठीक है, I think so we can just stop here. Okay, and we will continue next time with more problems. And I think सर ये नोट्स शेयर कर दिए हैं ना सर आपने? नहीं, ये आज मैं शेयर करूंगा. ठीक है, ये नोट्स जो है मैं आज करूंगा. थोड़ा मेरा वैसे मैं आपको सैटरडेज को नोट्स शेयर कर दूंगा, एवरी सैटरडेज. ठीक है, इस बार थोड़ा डिले चल रहा है मेरा, बट हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स आई विल शेयर टुडे. ठीक है, यस सर, कुछ क्वेश्चंस सर जैसे शेयर कर लोकेशन, दीजिएगा. हाँ बोलिए, वन बाय वन. सर ये लोकेशन मुंबई है, तो इस पे जो वो डिडक्शंस होते थे ना, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई, वो क्या होते थे? वो नहीं लेस किए? वो आई थिंक रिपेयर्स मेंटेनेंस का होता था, अगर गिवन है तभी होता है. नहीं, जो मुंबई में क्या होता था ना, आपका जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो होता था ना, आपका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, देखिए बाकी जो शहर होते थे, अदर सिटीज में आपका जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू होता था. ठीक है, फिर आप जो म्युनिसिपल टैक्स के जो परसेंट है, ये आप ये वाले वैल्यू से निकालते थे. ठीक है, बिकॉज दोनों सेम है तो आप सेम वैल्यू से निकालते थे. इन मुंबई वगैरह में क्या होता है कि आपका फर्स्ट जीएमबी होता है. ठीक है, फिर एक 10% डिडक्शन होता है उनका. ठीक है, लेकिन इसको हम अज्यूम नहीं करेंगे, हमको प्रॉब्लम में दिया रहेगा तभी हम इसको यूज करेंगे. ठीक है, तो ये 10% डिडक्शन से आपको एक एनएवी आता है, समझ लीजिए इसको एनएवी 1 बोलेंगे. इस सेकंड वैल्यू के ऊपर और एक डिडक्शन मिलता है जो कि वाटर सीवरेज का 5%. हाँ, वो 5% भी हमने अज्यूम किया था. सो बेसिकली ये टैक्स का जो रेट है अलग अलग जगह अलग अलग होंगे. ठीक है, बट ये जो ये 10% है, ये मोर और लेस ये 10% होता है, ऐसा ये है. बट स्टिल जैसे यू डोंट हैव टू अज्यूम, और आपको ऐसे एनएवी कैलकुलेट करना नहीं है आपको. तो आप सीधा जो है, आपको नहीं दिया है ना कुछ, तो आप सीधा क्या करोगे, सीधा आप इसको कंसिडर कर लोगे, जीएमवी को या एनएमवी कंसिडर कर लोगे. ओके, इन एब्सेंस ऑफ एनी डेटा, अगर डेटा है तो आप क्या कर किए होते, अगर उसने सपोज कई कुछ प्रॉब्लम्स में एनएमवी भी दे देता है यहाँ पे. ठीक है, जीएमवी का एक वैल्यू दे दिया, and then he will give you say an NMV here somewhere. ठीक है, NMV also he'll give. Okay, here he'll give 1 lakh and here he'll give 1,80,000. In that case 1,80,000. ठीक है, अगर if he gives like this, then what we will do, ये जो आपका 10% टैक्स जो है, this will apply on this. ठीक है, इन अदर वे राउंड रादर. ठीक है, ये जो 10% है, ये 10% हम ये इसमें एनएमवी में अप्लाई करेंगे मुंबई में, अगर दिया हो तो. ठीक है, अगर ये नहीं दिया है आपको एनएमवी, तो आप अपने मन से 10% लगा के आप नहीं करेंगे इसको. ठीक है सर ये 10% तो म्युनिसिपल टैक्स का है ना? ये म्युनिसिपल टैक्स का, ये दूसरा है. हाँ, हम तो रिपेयर्स मेंटेनेंस और वाटर सीवेज वो सब अप्लाई करेंगे ना? हाँ, वो सब आप अप्लाई करोगे अगर आपको दिया हो तो प्रॉब्लम में. तो जैसे ये देखिए, ये जो है आपका, ये म्युनिसिपल टैक्स का ये यूज कहाँ पे आता है, ये देखिए आपका जीएवी के बाद आता है ना, आपका यू विल गेट योर जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्सेस.
ठीक है, ये आपको एनएवी मिलेगा। फिर लेस वो दो डिडक्शंस आपका इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों आप लोगे। तब ये जीएवी कैलकुलेट करने के लिए आपको चार चीजें चाहिए, ठीक है, उसमें से एक है ये म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, ये वो वाला जीएमवी है। ओके, तो अब जो है, अब यहाँ बात ये हो गई है कि जब आप ये कैलकुलेट करते हो, ये जीएवी जब कैलकुलेट करते हो, तब आप ये ग्रॉस ही लेते हो, ठीक है, देन यू विल टेक ऑल ग्रॉस, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, और एआरआर माइनस यूआर, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। बस यहाँ पे फर्क बस ये हो गया आपको कि अगर आपको देखिए ये जो 10% दिया है ना उसने, ये 10% का आप क्या करोगे, बस वो बात होगी। ये 10% का यहाँ पे आपके पास अभी दो ऑप्शन है। ओके, या तो आप, ओके, यहाँ तो आप, यहाँ तो उसने 1000 दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ठीक है, जो अगर मान लीजिए कुछ परसेंट भी अगर वो दे देता ना, ठीक है, परसेंट भी दे देता, तो आप जो वैल्यू आपके पास है वही यूज करके आप परसेंट निकालोगे, ठीक है। इस केस में तो कुछ, इसमें डायरेक्टली उसने 1000 दे दिए। ओके, आपका डाउट सॉल्व हुआ प्रिया, हिमांशु? सर मेरा डाउट ये था, ये म्युनिसिपल टैक्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम तो रिपेयर्स, मेंटेनेंस या सीवेज का जो टैक्स होता है वो लेस करते हैं ना इसमें, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में। हाँ करेक्ट, वो लेस करते हैं, अभी म्युनिसिपल आप टैक्स लेस म्युनिसिपल नहीं टैक्स का करते। क्यों बता रहे हैं? अभी आप म्युनिसिपल टैक्स का बता रहे हैं ना? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो म्युनिसिपल टैक्स का जो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन हम्म। करते हो ना म्युनिसिपल टैक्स का, ठीक है, ये जो आप जो सीवेज वीवेज का जो आप करोगे, ठीक है, वो अलग है, वो अलग चीज है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपको 10% जो दिया है, या यहाँ पे ये 10% दिया है, ठीक है, ये गया का दिया है। अब यहाँ पे अगर आपको 10% दिया होता तो मैं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इसमें से कैलकुलेट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इसमें से कैलकुलेट करोगे, वो 10% अज्यूम नहीं करोगे, आप बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके 10% के ओके। साथ आप देखिए, ये जो 10% है, आप जो कंफ्यूज हो रहे हो, ये 10% के कारण हो रहे हो, ठीक है। तो ये जो 10% है आपका, ये म्युनिसिपल टैक्स दिया है, लेकिन जो वहां पे जो ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ, इफ यू वांट, तो वहां पे जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस 10% आप करते हैं, तब आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलता है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लेस 10% जो आप करते हो, अच्छा ये देखो, यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास है ना, ठीक है, उसका आपका जीएमवी है, ठीक है, इसमें इसमें आप 10% काटते हो कि नहीं काटते हो एनएमवी के लिए, यस और यस नो? सर। इसमें आप सीवरेज यस। काटते हो कि नहीं इसके बाद? हम्म। तो आपको जो फाइनल एनएमवी मिलता है ना, तो अब इसके बाद जो आपका जो म्युनिसिपल वाला जो टैक्स जो आता है, जो 10%, ठीक है, आपको अगर ये 10% दिया है, ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बोला है कि ये 10% नॉर्मली जो है किसमें कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर होता है ना, ये यस। म्युनिसिपल टैक्स है, ये 10% म्युनिसिपल टैक्स है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ये म्युनिसिपल टैक्स है, वो वैल्यू नहीं, ये म्युनिसिपल टैक्स है, ठीक है। ये जो 10% है यहां से कैलकुलेट होता है कि नहीं होता है? आर यू एग्रीइंग विथ मी और नॉट यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अभी ये वाला चीज आपको दिया नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ग्रॉस ही दिया है, तो आप 10% इसमें लगाओगे, मैं बोल रहा हूँ, ये 10% लगा के ये एनएमवी नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूँ। अब समझ में आया? ओके ओके। ओके, चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? ओके, लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है, चलिए, ओके, Yes, बाय। sir. Thank you, sir.